trouble seems to be mounting for NewsClick. A set of raids that have been taking place since early this morning on NewsClick employees and those associated to them. 5 sections of stringent UAPA, anti-terror law and penal code provisions. This news website is NewsClick. We are here at the Freedom Park where journalists, activists and others are protesting against the raids and arrest of NewsClick Editor-in-Chief Prabir Puryakasta. Here we have many journalists protesting for the rights of the freedom. You can see what's going on. Journalists have been protesting and raising slogans. ಮಾತನಾಡಕ್ಕಯ್ಯ ಮಾತನಾಡು. ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ದಾಳಿ ಇದು ಇವತ್ತಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಭೀಮಾ ಕೋರೆಗಾಂವ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಹಲವಾರು ಚಿಂತಕರನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ 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 ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್. Here with us we have Anand Kesahar, the former president of Press Club of India. Let us see what he has to say about the protests that are going on at Freedom Park. So clearly this raids and arrest of NewsClick editor-in-chief has been an attack on the journalism as well, and you know it's like a voice on the dissent that you cannot comment on the government. What do you have to say about it? You're quite right. It's an attack on journalism, but it's an attack on our people, because an attack on journalism is like an attack on the freedom of expression of the people themselves, right? If journalists do not write, they do not speak, they don't show you something on television, they don't speak on the radio, then information is not exchanged, information does not go out. Something has not been written about or said on television, it is as good as not having taken place. So what is said is very important. Is it propaganda only in support of the government, or are journalists in a position, are they free enough to report, observe carefully and then report honestly without coming under government's pressure? So by attacking journalists in this fashion, like on October the 3rd, what they have done is, and using something like the anti-terrorism law against them, which is the most blunt instrument in criminal law, what they've done is they've tried to spread fear among journalists, to intimidate them, so that journalists may speak less freely than they did before. I will say that journalism is getting a little bit harder in India now, which is the reason why it's all the more important that we have good young journalists coming into the field. Journalists who are not afraid of speaking truth to power. It's become a cliche, but you have to, with the voice of the voiceless, you have to speak truth to power. And it doesn't matter about the party, it's not about the politics of the government or the individual party. It's about calling authorities to account, holding people accountable for what they do. That is what a journalist needs to do. It's an old-fashioned value. It's valid in 2023. So we do need young, sincere journalists, but they need to come in with their eyes open, because things are a little more difficult on the ground these days. Here with us we have Asma, a senior journalist. Let's see what she has to say about the protest. Ma'am, clearly the press club has condemned this attack on the news club journalists and reporters and contributors. What do you have to say about them? What is being done in this country is absolutely outrageous. When you take up a profession like journalism, you're expected to go out into the field, ask questions, get to know the information and inform the people. That is your job as a journalist. Now if that is under fire, if people are going to be asked, did you go to JNU? Did you speak to the students? Did you cover COVID?
Did you cover the farmers' protest? Then what is a journalist supposed to do? I mean, it would be better if you decided, okay, we don't need journalists in this country anymore and end the profession. So long as you have a profession like journalism, then you should allow them to do the job. That is my first point. The second point that I'm really outraged about is you have some problem, let's say, with the owners of NewsClick or any media house. You have a problem with the editors of that. Why harass journalists? Why harass columnists? Why harass people like freelancers who have written for you? I mean, this is not a real, let's say, issue that is there. This is some kind of witch hunt that is being done to prevent people from, to prevent journalists from giving out information. And I think the target here is not so much journalists, but the people of India. You don't want the people of India to know what is happening. And therefore, you try to stop those channels of communication which will bring you the real information. Mom, as a journalist, when you look around so many journalists being harassed and punished for covering the stories, would this affect you, or are you, or at any point, are you afraid to report when such issues come into picture? I would think this is an incentive to do more, to say that okay, we are doing something right. I mean, if we are not doing something right, people would ignore us. Na? The fact that you're doing something right, the fact that we are being told not to do it by a government, then it means that there is something the government is trying to hide and we are trying to kind of bring it out. So no. And here, this is my poster. No prison is big enough to contain free speech. So no, I'm not afraid, and I don't think journalists are afraid either. We would not be here today. देखिए, ये जो हादिसा हुआ है, एक तो ये है कि गवर्नमेंट बौखलाई हुई है। डिजिटल मीडिया जिस तरह से आज तरक्की कर रहा है, उसकी एक एग्जांपल आप इस बात से समझ सकते हैं कि खुद मोदी साहब जो है अपना चैनल खोल के बैठे, यूट्यूब चैनल, और लोगों से कह रहे हैं कि आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। तो ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि डिजिटल मीडिया जो है अब काम कर रहा है और हुकूमत के जो तलवे चाटू मीडिया है उसके ख़िलाफ़ एक मजबूत दीवार बन के खड़ा है। इसीलिए आज हुकूमत को इस बात की ज़रूरत पड़ी है कि वो इस मीडिया को ख़त्म करने के लिए इस तरह के अटैक कर रहा है, इस तरह के रेड्स कर रहा है और उन पर UAPA लगा रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि जिनके लिए हम खड़े हुए हैं वो ख़ुद यहाँ कम तादाद में नज़र आते हैं। हो सकता है कि ये खौफ जो हुकूमत दिखाना चाह रही है उसके ज़ेरे असर कुछ लोग डरे हुए हैं कि कहीं हमारी इदारों पर भी, हमारे संस्थाओं पर भी जो है इस तरह के रेड ना हो जाएं, इस तरह के जो है UAPA ना लगाए जाएं। तो ये खौफ से हमको निकल कर के बाहर आना चाहिए। अवाम आपके साथ है, जनता आपके साथ है, आप इस खौफ से बाहर निकल कर आइए। हम सब मिल कर के इस फैसिज्म के खिलाफ एक साथ हम आवाज़ उठाएंगे। Why is mainstream media here not even to cover the protest? Forget taking part. Like why are TV9, Suvarna, Kannada Prabha, Vijay Karnataka, Vishwavani, Vijayvani, BTV, why are those channels not even here, and why are they not covering the protest is a significant question. I mean, this kind of attack on NewsClick, and it's not just on the editor of NewsClick or something, like even people who contributed 1 or 2 articles to NewsClick have been raided. So when these kind of overreaching measures are being taken to silence the media, it's really shocking and saddening that other mainstream media houses are not here. That most of the media houses today here are like not mainstream media houses but smaller media houses. नहीं, वही मैसेज देने के लिए वो रेड किया है, क्योंकि लिए कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज होता तो एजेंसीज इंक्वायरी करते थे, कोई ऑफिस को लॉकआउट नहीं करते थे। लॉकआउट करने का मतलब है स्मॉल और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, अभी कोई जर्नलिज्म बचा है देश में तो वो स्मॉल और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कर रहे हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, वो सबको एक मैसेज भेज रहे हैं, हमारे साथ रहिए, नहीं तो आपके क्या होगा, यही होगा, हस्र होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लास्ट 10 साल से हम देख चुके हैं, 10 साल से यही होते आ रहा है। बट इसके डरने से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि लिए कितने डरेंगे आप, कितने पीछे जाएंगे, एक हद तक जा सकते हैं, उसके पीछे नहीं जा सकते। वो वक्त आ चुका है। मोदी गवर्नमेंट को 2024 इलेक्शन आने वाला है, उससे वो डर रहे हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं वो इलेक्शन जीतने के लिए। इसके लिए अभी तक कितने लोग जुड़े हुए हैं स्ट्रांगली, फर्मली कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए, वो जर्नलिज्म से जुड़े रहना चाहिए। डरना की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, लोग जेल में डाल सकते हो, उससे कुछ नहीं होगा। ये जर्नलिज्म तो करना ही चाहिए, जर्नलिज्म क्या है वही दिखाना चाहिए। सर, मैं और एक सवाल, हम लोग बड़े बड़े बात करें, नेशनल मीडिया बोलते हैं, सैटेलाइट मीडिया बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं गोदी मीडिया बोलते हैं, और दोनों लोग बोलते हैं न्यूट्रल मीडिया। बट एक जर्नलिस्ट को अटैक करते होता है, एक फर्ज होता है कि हर जर्नलिस्ट को आगे हाथी सपोर्ट। बट आज देख रहे हैं बहुत कम जर्नलिस्ट है सर। हाँ, ये जानते हैं कि दुनिया भर के, इंडिया भर में जर्नलिस्ट गिल्ड को दे हैव कमेंटेड, बट फिजिकली बहुत कम लोग। बट
ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें क्या दिया है, और सिर्फ वो जर्नलिस्ट को नहीं दिया है, सभी आदमियों को से, सभी पब्लिक को दिया है। सभी पब्लिक का क्या है वही जर्नलिस्ट के साथ है। वो इसका मतलब ये है जर्नलिस्ट का मुंह बंद हुआ तो पब्लिक का भी मुंह बंद हुआ। इसका मतलब सभी पब्लिक आकर करना है, सभी पब्लिक आकर ही कर रहे, कोई जर्नलिस्ट नहीं कर रहे। कुछ चुने गिने हुए जर्नलिस्ट इधर है, बाकी सब पब्लिक है और जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स है। ये शर्मनाक बात है। कर्नाटक में कोई सभी जर्नलिस्ट बॉडी है, प्रेस क्लब है, वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, रिपोर्टिंग गिल्ड, रिपोर्टर्स गिल्ड है, सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया है। उन लोगों ने कुछ प्रोटेस्ट नहीं किया। वही दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ दिल्ली, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और मुंबई का जर्नलिज्म बॉडी उसको प्रोटेस्ट किया और अपोज किया। बट बेंगलुरु में सब नहीं हुआ, सिर्फ स्टेटमेंट दिया गया। ये बहुत गलत बात है। कोई दुनिया में कहीं भी जर्नलिज्म के ऊपर, जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक होता तो उसको खिलाफ हमें आवाज़ उठाना है, सभी जोड़ना है। इसके सब आना चाहिए था, जर्नलिस्ट आने चाहिए थे, मेन इंस्टीट्यूशन के जर्नलिस्ट आने चाहिए थे, जर्नलिस्ट बॉडी का लोग इंस्टीट्यूशन लोग आना चाहिए थे। कोई आ नहीं पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग हमारे साथ हैं, उनके साथ खड़े रहेंगे। The raids on NewsClick have been considered an action against critical journalism. What do you have to say about it? Whether it is against just NewsClick or journalist fraternity or the citizens of India and the freedom of expression? Do let us know in the comments below. Thank you. This is Akshita Mehta reporting for Daily Salar Digital.